نمام لاړ شم. زنگ وهوی چې که او ان شاء الله نو ما ته څه خبر سلامت السلام علیکم. د ګروپ ټولو ملګرو ته وروره کلاس شروع شو. ښه ټول کلاس ته حاضر شئ. کلاس شروع شو. روحانی صاحب محترم، تیم انجینری امروز ماشون آمد دیگه. کتیزو از شما هم بود، من پرسان کردم انشالله شما چک کنین آماده خود بود بخیر یا امروز خانمد بخون. برادر گرامی لطفا مایک تا بند کو. صحیح است به خاطر که استاد درس میده.
Acha, Bismillahirrahmanirrahim. I think we shall start the class. 5 minutes we have waited. So my name is Shakil Wahab Siddiqui. I'm the one who is the program head of this MSPM program and MPM as well. We started the journey of MS Project Management in 2010. We have been offering this program since last 10 years and abhi tak, so far so good. आज की जो वीक है, टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक मेथोडोलॉजीज एंड टर्म्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके साथ फिर इन अपकमिंग क्लासेस में फिर हम इस डिटेल में इसको करते जाएंगे। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आप की क्लास अगर 12 बजे शुरू हो रही है तो आप वक्त पे जो है ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हमारे लिए फिर बन जाता है। बार बार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती जाती है, उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं, इसमें 40 मिनट लूज हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। Basically, in first semester I have offered 3 courses, that is strategic management, research methodologies, and project scope and integration management. In project scope and integration management, basically in project management you have 10 knowledge areas, and all together we will discuss and study 49 processes of project management. Those 49 processes have been subdivided into 10 knowledge areas. That is project integration management, project scope management, then we have project time management, cost management, quality management, leadership, that is resource management, communication, risk management, procurement, and stakeholder. So you will study all knowledge areas and all processes of project management in this entire degree. And we will also study research methods along with it, and quantitative tools for research, because these courses are also very important. Like as I said earlier, as a business manager, you will have to deal with the problems, and to solve the problems, you must understand the basic terms, methodologies, and scientific methods to resolve those issues in your daily routine work, in project management and office work as well. So both courses साथ चलते रहेंगे. A core initiative I'm going to take, that is, as a project manager, you must have complete understanding and expertise in IT tools as well, because as a for example, you are a project manager and you don't know how to use MS Word, you can't draft a letter, you can't use MS Excel. As a project manager, obviously you will have to deal with daily activities, you will develop network diagram, you will manage resources, you will assign resources to different activities. So such things cannot be done manually. You will have to use softwares. For that purpose, we use project software, that is the brand of Microsoft, and we also use Primavera software as well, जो कि Oracle के अंदर चल रहा होता है. So I cannot offer all these courses in this degree because this is not a computer science degree. Fine. So what we do, we will offer different workshops. We will arrange different workshops for you. One day workshop will be for MS Word, one day workshop for MS Excel, one day workshop will be for Microsoft PowerPoint, couple of workshops for Microsoft project and Primavera software as well. So we will conduct online workshop sessions for you people. You will participate in it, and the workshop कहते किसको है? Workshop कहा जाता है जिसमें के participant participate करता है different activities में. So if we gonna offer courses online, like due to this COVID pandemic, so how we'll manage? We will deliver online trainings for you, and then you will participate in the learning management system LMS, that is Moodle software we have been using for this online activities. So उसमें जाके आपको करना पड़ेगा, और all together we will offer, जब जो student successfully workshop में participate करेगा, फिर हम लोग उसको certificates वगैरह issue कर देंगे. तो along with the degree, you will study MS Word, MS Excel, PowerPoint, Project 2019, Primavera software, and Visio software as well, and few highlights of SharePoint system. SharePoint के ज़रिए हम अपने टीम को जो है कंबाइन रखते हैं, और कुछ सेशंस हम लोग जो है तो
गूगल ड्राइव्स और इनके भी कर देंगे, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आईटी टूल्स के ऊपर, क्योंकि विदाउट आईटी टूल्स यू कैन नॉट डू दैट वर्क। ठीक हो गया जी। सो ये तो था, मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं आपके साथ बेसिक ये चीज़ डिस्कस कर लूँ। नाउ लेट्स कम टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड। After the class I will share these slides with you all on this WhatsApp group, और आप उसको डाउनलोड करके उसको स्टडी कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So let's talk about project management. What is project? जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो हाउ टू डिफाइन प्रोजेक्ट? A project is, according to PMI, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. In a project, you will have to deal with two things. Number one, project is temporary. By temporary means it will definitely has a start date or end date. Or unique means that I've been appointed as a project manager for a specific project on during a specific period of time. Few people are working with me. For example, 10 team members are working with me in the month of February from 12 morning 8 a.m. to 12 p.m. or 2 p.m. सो उस टाइम पे तो वो किसी और के साथ काम नहीं कर रहे। ठीक है, मैं इस टाइम पे किसी और प्रोजेक्ट पे इस स्पेसिफिक आवर्स पे तो काम नहीं कर रहा। सिमिलरली जो मेरे जो प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेस हैं, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, वो हो सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ तो नहीं होंगे। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा बहुत से एलिमेंट्स हैं, इस चीज़ को मिलके वो यूनिक बना देते हैं। सो अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक product, service, or result. A project is a sequence of unique, complex, and connected activities having one goal or purpose that must be completed by specific time, within budget, and according to specification. A project is a complex, non-routine, one-time effort limited by time, budget, resources, performance specifications, designed to meet the customer needs. A, a project can create a product or a component of a product, a capability to perform a service. Main features of the project are: number one, it will be temporary. By temporary means it will have a start date or end date. It cannot, we cannot say that your project will take unlimited time to complete. You will have to specify the specific dates for the project. That's why we call it temporary. And to create a unique product, service, or result, it will have a second property that is unique. So temporary means that it has definite start date or end date, or end is reached when objectives have been achieved. We do project to achieve our objectives. Objectives are our maqasid, जिसको achieve करने के लिए we initiate the project, we start a project. So objectives are given in a project charter. That is the first official document. We'll talk about what is project charter in upcoming lectures. So end is reached when you achieve the objectives. End is reached when you cannot achieve those objectives, or the need for the project is no longer exist. So this was all about project. Let's talk about what is project management. Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques. Remember, in project management, you have to work in 10 knowledge areas. There are 10 knowledge areas in project management, starting from project integration to stakeholder. We use PMBOK as a reference guide for project management. We use number of other books as well, but our reference book is PMBOK. So
To do project activities to meet project requirement, it is accomplished through appropriate application and integration of 49 logically grouped project management processes. What does it mean? 49. For instance, your first thing in project management is to develop a project charter. Project charter is the first official document which authorizes project manager to formally start the project. That is process number one, develop project charter. As a project manager, you will take project charter and you will what do? You will develop project management plan. So developing a project management plan is another process. So then we gather requirements from the stakeholder. This is another process. Based on the requirement documentation, we we summarize those documents into project scope statement. That is another process, define scope. We graphically explain our project top to down. That is called work breakdown structure. Work breakdown structure is another process. So did you get idea what I'm trying to say? You will have to understand, you will have to study 49 processes of project management. So all these 49 processes have been subdivided into 10 knowledge areas and 5 process groups. What are 5 process groups? Process groups are initiating, planning, executing, monitoring, controlling, and closing. Please hold. अच्छा जी. So this is the example table I have developed for you. You have 5 process group, like I said earlier: initiating, planning, executing, controlling, and closing. Fine. So in initiating phase, we have 2 processes like develop project charter and identify stakeholders, because stakeholders are the people who will give you requirements for the project. In planning phase of the project, you have develop project management plan, plan scope management plan, collect requirement, define scope, create work breakdown structure, plan schedule management, define activities, sequence activities, estimate activity duration, develop schedule, plan cost management, estimate cost, determine budget, plan quality management, plan resource management, estimate activity resources, plan communication, plan risk management, identify risk, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, plan risk responses, plan procurement, plan stakeholder engagement. So, आपको याद आया, we talk about 49 processes. So these are the 49 processes. Then in executing phase of the project, we have processes to study. In controlling phase of the project, we have processes to study. And obviously in closing phase of the project, we have only one process. That is the part of integration section as well. So they have divided these 49 processes logically into 5 process groups and 10 knowledge areas. ठीक है? Basically, you will study these processes in this degree, and we have divided these processes into different courses in MSPM degree. Like we are studying right now project scope and integration management. We will this course I'm taking this course in this semester. So in this course, we will study develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work execution, monitor and control project work, perform integrated change control, and close the project. And in the scope phase of the project, we will study plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, verify scope, and control scope. Validate scope. सो आप इस कोर्स में जो मेरे साथ है उसमें ये सारे प्रोसेसेस स्टडी करेंगे. नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का कंबाइंड कोर्स ऑफर करूंगा. उसमें ये तमाम प्रोसेसेस आप मेरे साथ स्टडी करेंगे. फिर क्वालिटी मैनेजमेंट,
हमारा जो कोर्स होगा उसको हम कंबाइन कर लेते हैं। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में आपके ये सारे कोर्सेज प्रोसेसेस आ जाएंगे और साथ ऑब्वियसली कम्युनिकेशन उसका पार्ट बन जाएगा। और रिस्क मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का कंबाइन कोर्स आपको 3rd सेमेस्टर में ऑफर होगा जिसमें ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। सो इस तरह से हम इंटायर डिग्री के जो प्रोसेसेस हैं वो बाकी जो प्रोसेस हैं इंटायर डिग्री में कंप्लीट करते हैं। अलॉन्ग विद वी ऑफर रिसर्च मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। फिर जब लास्ट सेमेस्टर आएगा तो लास्ट सेमेस्टर में फिर क्या होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको थीसिस करना है, रिसर्च की तरफ जाना है या आपको कोर्स वर्क की तरफ जाना है। अगर आप कोर्स वर्क की तरफ जाएंगे तो हम आपको कोर्सेज दो ऑफर कर देंगे और इस तरह आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह आपको इन 2 साल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं। आई विश के ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। कोरोना का जो ये पेंडेमिक चल रहा है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे और हम बैक टू नॉर्मल लाइफ आएँ। लेकिन जब तक नॉर्मल लाइफ पे नहीं आते, वेदर वी आर सिटिंग ऑन कैंपस या ऑनलाइन क्लासेस हैं, this is my guarantee that we will deliver quality lectures, quality material. We will share quality material. We rely on technology. We use Moodle software for online activities and examination and everything. So let's talk about the success ratio of project management. If project manager does get the project completed for the time and cost agreed to, he or she does not. If the project manager does not get the project completed, ठीक है, इसमें थोड़ी mistake है, does not. If the project manager does not get the project completed for the time and cost agreed to, he or she should be relieved of the position. Studies conducted by Standish Group in 2004 show that only 34% of projects are successful. This doesn't mean कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फेल ही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता। फेल होने का मतलब ये होता है कि you had agreed dates that you will complete your project in a specific time. अगर आपका वो टाइम ओवर हो गया, आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। अगर आपने बजट रखा हुआ था 20 मिलियन और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है आपका 60 मिलियन में, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। तो इन तमाम चीज़ों पे रिसर्च की गई और तो उन्होंने देखा कि 34% जो प्रोजेक्ट थे वो सक्सेसफुल थे, बाकी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये होता है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वी आर नॉट डूइंग गुड जॉब। Why? Because we may lack in understanding of different processes of project management, skills, या आपकी टीम अच्छी नहीं हो सकती। That's why we offer this degree to train our students to learn the standard processes of project management so that they may are implement in their practical life और उसमें आपके जो projects हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लेके चल सकें। So are you really working on projects? If your projects are less than 3 months long and have less than 20 people on the team, you might not be working on a project. On large project, you may have spent weeks planning communication. Remember, as a project manager, you will spend 90% time in just communicating with the project stakeholders, project sponsors, project team members, customers, the functional managers, and PMO office, and people working in different sectors, obviously. So as a project manager, you must have very, very good communication skills. You must be very good at writing skills and presentation skills आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपके टीम मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, you must resolve those conflicts well on time, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आप तभी रिजॉल्व करोगे जब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। फिर आपने कन्विंस करना होगा, आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। आप तभी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे जब आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारा चल रहा होता है। So this was all about project management and project. Let's talk about operational work. What is difference between operational work and project work?
ऑपरेशनल वर्क इज ऑनगोइंग और प्रोजेक्ट वर्क एंड्स, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क मैंने बताया स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है। ऑपरेशनल वर्क कभी एंड नहीं होता। लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर स्टार्ट होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, हम एग्जाम्स लेते हैं, मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म होता है, लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, सेमेस्टर खत्म, फिर उसके बाद नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो एक एक्टिविटी है डेली बेसिस पे जो हम परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन वी हैव अ लुक इनटू न्यू पेम्बॉक ड्यूरिंग द कोर्स। यस, सिंस पेम्बॉक 7th एडिशन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। आप अमेजोन पे भी जाएं तो मैंने ऑलरेडी जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, लेकिन जो डिलीवरी डेट है उनके पास अभी तक नहीं आई है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि विद इन 2 months ये बुक रिलीज हो जाएगी, लेकिन जब रिलीज होगी फिर उसके बाद ये डिफरेंट पब्लिशर्स के पास जाएगी, वेंडर सॉरी के पास जाएगी, अमेजोन या इस तरह, फिर वहाँ से पाकिस्तान आएंगी। उसमें आपका शिप पे टाइम लगता है, महीना तकरीबन लग जाता है। फिर वो जब वो जो रेफरेंस बुक है ना पेम्बॉक की बेस पे फिर डिफरेंट पब्लिशर्स ऑथर्स बुक्स लिखते हैं, डिटेल्ड बुक्स लिखते हैं, जिस तरह रीटा हो गई। अब रीटा की बुक रिलीज हुई है, उन्होंने सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस हुई थी तो वो ऐड की थी, लेकिन बुक के कंटेंट्स उसकी बेस पे नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली नीचे लिखा हुआ है कि ये जो बुक है ये 6th एडिशन की बेस पर है। तो हमें अभी नहीं पता कि जो 7th एडिशन आ रहा है उन्होंने क्या एडिशन डिलीशन की है। जब वो बुक आएगी देखेंगे, फिर उसके मुताबिक हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया हम अपनी डिग्री में सिर्फ पेम्बॉक ही सिर्फ लेके नहीं चल रहे होते, वो एज अ रेफरेंस गाइड हमारी यूज हो रही होती है, बाकी बहुत सी चीजें हम इसके साथ पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ऑपरेशनल वर्क। मैंने बता दिया ऑनगोइंग होता है, प्रोजेक्ट वर्क एंड होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, आपने को अगर सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं लाइक प्रोजेक्ट और प्राइमवेरा तो आप बस प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए। मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर है, अगर ये कैलकुलेटर मैं आपके हाथ में दे दूं तो क्या आप अकाउंटेंट बन जाएंगे? आप फाइनेंस मैनेजर बन जाएंगे? आप अपने मुल्क का बजट बना सकेंगे इस कैलकुलेटर की बेस पे? सॉफ्टवेयर की भी यही एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर एक टूल्स हैं जो कि आपके काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लेते हैं। लाइक आपके लिए ग्राफ्स बन जाएंगे, आपके लिए रिपोर्ट्स कम्प्रीहेंसिव बन जाएंगी विद इन नो टाइम। आप शेयरिंग कर सकते हैं, हर एक को अपना अपना काम नजर आ रहा होगा, ईमेल सिस्टम आप यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन रिजॉल्व करेगा? आप। कोई भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो नहीं कर सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके लिए नेटवर्क डायग्राम तो नहीं बना सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर आपकी एक्टिविटीज को रिसोर्सेज तो असाइन नहीं कर सकता। वो तो हम डेटा उसमें पुट करते हैं ताकि आपको वक्त पे जल्दी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नजर आ सके। ठीक हो गया जी। सो इस वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक प्रोजेक्ट का प्राइमवेरा इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? द आंसर इज नो. Project management is a profession that is growing rapidly. It is both a science and art and follows a systematic process. The Project Management Institute breaks project management into 5 process groups: knowledge areas, profession and social skills. फिर हम बात करते हैं प्रोग्राम की। व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे आपका देखें बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन में आपका क्या सिस्टम होता है? आपके एक ही स्ट्रीट में 20 घर बन रहे हैं। अब वो 20 के 20 घर एक स्ट्रीट में बन रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस स्ट्रीट में पोल्ट्री फार्म भी है, उस स्ट्रीट में फैक्ट्री भी है, उस स्ट्रीट में मस्जिद भी है, उस स्ट्रीट में घर भी है, उस स्ट्रीट में और चीजें भी हैं। सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं। A program is a group of projects. Their management is coordinated because projects are related. For instance, एक घर बन रहा है, उसमें डिगिंग जारी है, तो वो जो मशीन है आज डिगिंग पे ऑक्युपाइड है। अगले दिन वो मशीन किसी और घर को हम ट्रांसफर कर देंगे। वहां पे जो लेबर काम कर रही थी वो लेबर आज मेरे पास आ जाएगी। जो सैनिटरी की लेबर है वो मैं जो है हाउस नंबर डी को डिफरेंट डेज पे दे दूंगा। तो हमारी अपनी टीम होती है, हम उस टीम को शेयर्ड रिसोर्सेज की फॉर्म में यूज करते हैं ताकि हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स
कर सकें। लेकिन अब प्रोग्राम में जो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं हमेशा याद रखिएगा वो रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो होती है। पोर्टफोलियो रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स एंड other work that are grouped together. For example, infrastructure firm that has a strategic objective of maximizing the return on its investment may put together a portfolio that includes a mix of projects in oil and gas, power, water, roads, rail, airport. From this mix, the firm may choose to manage related projects at one program. All of the power projects may be grouped together as a power program. Similarly, all of the water projects may be grouped together as a water program. So portfolio टॉप पे होती है, portfolio के नीचे programs होते हैं, programs के अंदर projects होते हैं, portfolio के नीचे direct projects भी चल रहे होते हैं। जैसे एक कंपनी की एक्सपर्टीज होती है तो हम अक्सर कहते हैं आपकी कंपनी की पोर्टफोलियो क्या है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कंपनी का वो कहते हैं मैं हमारी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, ये काम भी किए हुए, ये प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, तो वो सारी की सारी डिटेल्स बता रहे होते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल भी है, ठीक है। याद रखिएगा कि आज का हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिक टर्म्स मेथडोलॉजीज आपके साथ शेयर करना है प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो मैं बेसिक टर्म्स आपको बता रहा हूँ, लाइक मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, लाइक मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, लाइक मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में बता दिया, मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज होती हैं प्रोजेक्ट में ताकि आपको इसका आइडिया बहुत अच्छे तरीके से हो। सो लेट्स टॉक अबाउट टेलरिंग। टेलरिंग यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर्स अप्लाई अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज टू देयर वर्क, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेलरिंग। फॉर एग्जांपल आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की कौन से स्टैंडर्ड आपके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फोकस ग्रुप्स हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स हैं, इंटरव्यूज हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है ना। तो ये टेलरिंग होती है, इसको हम टेलरिंग कहते हैं बेसिकली। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज आर रिकमेंडेड रेफरेंसेस फॉर टेलरिंग। मैंने कहा PMBOK बुक है लेकिन कुछ इस तरह की बुक नहीं है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो उसको पढ़ के, ये एक रेफरेंस बुक है। फिर इस रेफरेंस बुक की बेस पे डिफरेंट ऑथर्स ने डिटेल्ड बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स उन डिफरेंट एकेडमिक बुक्स को लेके चलते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। फिर एक और टर्म यूज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिसको कहा जाता है PMO ऑफिस। याद रखिएगा जो भी प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या वो कंपनी जहाँ पे प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं वहाँ पे PMO ऑफिस होता है। PMO ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, provides the policies, methodologies and templates for managing projects within the organization. PMO provides support and guidance to others in the organization on how to manage projects, train others in project management or project management software, assist with specific project management tools. It provides project managers for different projects and is responsible for the result of those projects. We have three types of PMO office. Number one is supportive, controlling, and last one is directive. What is supportive? In supportive, they are supposed to provide you templates, methodologies, procedures. They just facilitate your work. कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, so they are here to serve you as a project repository. The degree of control provided by the PMO is low as far as supportive role of PMO is concerned. Whereas in controlling part of the PMO controlling PMOs provide support and require compliance through various means. For instance, project manager is supposed to perform this activity in this week. So PMO office will be strictly monitoring the project manager in that week, or they will ask project manager to provide the compliance reports. Compliance कहा जाता है कि आपने काम किया कि नहीं किया। एक और होता है रोल जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव। Direct PMOs take control of the project by directly managing the project. इस directive role of the PMO में project manager will have little or no authority.
They will be dealing and managing the projects directly. Project manager is there just puppet, ठीक है, as a coordinator or even expeditor. So direct PMO take control of the project directly. ठीक हो गया जी. फिर एक और टर्म यूज होती है ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है मकसद को. Project objectives are contained in the project charter. Projects are considered complete when objectives have been met. In your project management, the first official document is called project charter. Project charter is normally developed by the project sponsor, not the project manager himself, because at that point, project manager appoint bhi nahi hua hota. So project objectives are contained in a project charter. Fine. Projects are considered complete when you achieve your project objectives. Reason for terminating a project before completion is that project objectives cannot be met. It is the project manager's role to accomplish the project objectives. Fine. So we have another thing that is called constraint term. What are constraints? Constraints are something which limits you. For example, you have to complete your project in 3 months. This is your time constraint. You cannot utilize resources, cost resources more than 20 million. This is your cost constraint. You cannot use more than 12 software engineers for this project. This is your human resource constraint. So we deal with the constraints and we complete our project within time, within budget, and according to specification. That's why we train project managers. That's why we study project management methodologies and tools and techniques, so that as a project manager, I am efficient one to complete my project within time, within budget, and according to specification. So project constraints limit options, and within those limited options, as a project manager, your job is to get things done. So time is a constraint, cost is a constraint, scope is a constraint, quality is a constraint, customer satisfaction is a constraint, risk is constraint, resources are constraint. So these are all constraints. And as a project manager, you must understand these constraints and try to complete your project effectively and efficiently. We will also study term stakeholder. Stakeholder, people who give you requirements for the project. Stakeholders are the people, for them you perform project work. They are the people who give you requirements for the project. Thinking of stakeholder assistant team member means you keep them informed, solicit their input, work to satisfy their needs and expectations. Without this effort, your project cannot be